Hello students, good morning all of you and welcome back our online class Maths 7th standard. Students, today we are going to continue our first chapter, that is the integers. In previous video already you have studied about that what is that multiplication of integers. So now today we are going to discuss about its applications with that examples. Today in this video we are going to learn. So how will discuss how we'll apply that properties and where we are using this property multiplication or that like a closure property or a associative property or a commutative property or a distributive property, which are properties we are using in this the number system that we have to understand in this video. So let us start. First of all, that examples I have written. First example, estimate the following using suitable properties, also mention the properties used. So first question, 275 into 163 whole into 0. Second question, 325 into minus 23 plus 325 into 23. This is the first example question. First of all we will solve, then we will discuss about that example 2. So let us start that solution. First question given, 275 into 163 whole bracket into 0. Okay, students, observe that by according to that associative property we can multiply any integers in any order. Okay, 3 integers we can multiply any order. If we will change its position, the value unchanged. Okay, so first what we can write this, I will write 275 into 163 into 0. This is called as associative property. Associative property. ठीक है स्टूडेंट्स, वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, फर्स्ट ये दोनों integers we have multiplied, but what I have done, these two I first of all I multiplied, then after I will write now 275 into this value is 0, the answer will come 0. Okay, very easily by applying that properties I got that answer. Why? Because if you will multiply this it will take more time. So by that associative property with I change its place, the position, then I got that 163 into 0. Why? Now these 3 all are the multiplication. So this is associative property. 2 numbers are in bracket into 0. So in the right side also we can write these 2 number with the bracket, this one will take out. So by associative property this I have written. Now that result, this will become 0 and 275. 275 into 0 is equal to 0. Okay, so second question we can solve. That is 325 into minus 23 plus 325 into 23. Look at students, if this one we are observing, this is also called as a distributive property. Yes, distributive over multiplication over addition is there. So distributive law this is, so we can write this is 325 is there, we can write common here 325 and in the bracket we can write minus 23 plus 23. क्यों ऐसा लिख सकते देखो बेटा, इधर माइनस 23 इधर माइनस 23 है इधर, सो ये 23 हम रख सकते, ये जो 325 320 बाहर निकाल देंगे तो ये दोनों रहेंगे. सो ये दोनों को ब्रैकेट में, इसको बोलते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्रॉपर्टी. ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है बेटे याद रखो, क्योंकि हमें इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो ऐसा रहेगा तो हमें ऐसा लिख सकते, ये दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इसको पहले कॉमन रख सकते. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, क्योंकि सिंस हमें डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला क्या है मालूम है ना, ए होल बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. अभी ये आर एच साइड का फॉर्म पे है, ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी में है. ठीक है, a into b plus a into c. This is a, suppose this is the b, this is a, suppose this is the c. ठीक है, तो a को हमें पहले कॉमन करेंगे तो b प्लस सी होगा, तो a को कॉमन मतलब 325 रखेंगे तो b प्लस सी होगा. तो अभी क्या होगा, 325 इंटू ये माइनस 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 0. सो इज इक्वल टू दिस ऑल्सो आंसर विल गेट 0. ठीक है, दिस ऑल्सो वी कैन राइट ऑल्सो. स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव क्या है,
आइडेंटिटी, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी कैन गो फॉर द सॉल्यूशन. दिस वन, look at here, find the product using suitable property. This is also suitable property, this also suitable property. So difference, what is that? You should observe that. First question, 26 into minus 37 plus minus 37 into 74. Students observe, this is also distributive property है, क्योंकि इधर देखो -37 दोनों नंबर को मल्टीप्लाई है. तो हमें क्या कर सकते हैं, -37 को ब्रैकेट रखेंगे बाहर पे, और ये 26 प्लस 74 को रख देंगे ब्रैकेट में. तो इसको हमें लिखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. क्यों हमें रखा, क्योंकि देखो बेटे इधर जो -26 है, इधर 74 भी है, इधर -37 है, इधर -37 है. तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंपलसरी है. तो इसीलिए -37 को बाहर निकल के तो जो दोनों नंबर रहेंगे उसको ब्रैकेट में लिख सकते. तो अभी क्या हो सकता, -37 इंटू ये दोनों को ऐड करके तो 100 होगा. तो इजिकल टू इफ विल मल्टीप्लाई 3700 होगा आंसर, ठीक है. सेम लाइक स्टूडेंट्स वी कैन गो फॉर दैट बी. व्हाट इज दैट बी, बी इज इक्वल टू 8 इंटू 47 इंटू -125, ठीक है. स्टूडेंट्स इफ विल चेंज इट्स मल्टीप्लिकेशन बिकॉज 3 इंटीजर्स आर देयर. इफ विल राइट 47 इंटू 8 इंटू -125 and if you make it into bracket, then there is, if you, I have told already, associative law is satisfied in the multiplication. That means any 3 integers can multiply any order. So if 3 integers any order is there, multiplication is there, we can multiply with any order. So now we can do 47 and 125 एरिया कितना है, कितना है, 1000 है. सो -1000, सो इज इक्वल टू -47,000. सो विदाउट, व्हाई, व्हाट इज दैट नेसेसिटी फॉर दैट एप्लीकेशंस, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टीज, बिकॉज विदाउट मल्टीप्लाइंग, without real multiplication also we can get that answer. That's why you are using general students, what is that, properties. Okay, now and you should practice also students by using that properties, and you can easily, you will get that more interest. So which property I used here, associative property. Which property, associative property, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें सी को करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सी. क्वेश्चन क्या दिया, -17 इंटू 102. ओके, हमें इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं. व्हाट वी कैन राइट दिस, 17 इंटू 100 प्लस 2, ठीक है. अभी ऐसा करके तो आंसर हमें लिख सकते हैं. इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो वी कैन डू विथ अप्लाइंग दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. तो -17 इंटू 100 प्लस -17 इंटू 2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव law or distributive property. So is equal to 1700, so -1700 plus -34, ठीक है. 17 into 2 -34, so is equal to -1734 is the answer. So like this way students you can complete that other remaining exercise parts, and you have to do other all that whatever that examples remain and our exercise part you have to complete. Thank you all of you. If you have any doubt, please send me that questions through that WhatsApp. I am ready to explain. Thank you.